everyone. My name is Sebastian and I am from ICICI Academy for Skills Mumbai. I'm a trainer. I'm here to support the National Youth Day. We believe in youth skilling. Do you support this? Be a part of our mission. हे गाइस, इट्स नेशनल यूथ डे टुडे और आज के इस खास दिन के लिए आपके लिए एक मैं खास मैसेज लेके आया हूँ. ऑल द इंग्रेडिएंट्स, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ. ऑल द इंग्रेडिएंट्स नेसेसरी टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, इट्स ऑल विद इन यू. बस अगर वो गुमशुदा सा हो गया है तो उसे ढूंढना है और सही रास्ते पे लेके आना है. अगर वो सो सा गया है तो उसे जगाना है. और अगर आप उसे पहचानने से इनकार कर रहे हो तो it's time you start making friendship with those ingredients, because only when you start believing in yourself, only when you see the world with a positive and right attitude, that only then you will see a world of opportunities opening up for you. So today's youth is tomorrow's future, and I wish you guys all the very best. God bless you all. नेशनल यूथ स्किल डे 12 जनवरी को नेशनल यूथ स्किल डे सेलिब्रेट किया जाता है. यूथ के लिए यह दिवस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. हमारे यहाँ बहुत ऐसे लोग एकेडमीज होती है जो यूथ के स्किल को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जैसे कि ICICI एकेडमी फॉर स्किल. इनकी तरफ से जो क्लास लिए जाते हैं उनमें बहुत से स्टूडेंट को अपने स्किल डेवलप करने का चांस मिलता है. उनकी तरफ से ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, स्केलिंग स्किल, होम हेल्थ अहेड, असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट ऐसे क्लास लिए जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. इनका बहुत से स्टूडेंट को फ़ायदा हुआ है. थैंक यू ICICI एकेडमी फॉर स्किल. धैर्य, दृढता आणि तत्परता ह्या तिन्ही गोष्टी यशासाठी आवश्यक आहेत, असा संदेश युवकांना देणारे प्रेरणास्तोत्र समाजसुधारक स्वामी विवेकानंद. भारत देशामध्ये स्वामी विवेकानंद यांचा जन्मदिवस 12 जानेवारी हा दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस म्हणून ओळखला जातो. ह्या महान व्यक्तीचा जन्म 12 जानेवारी 1863 मध्ये कोलकाता येथे झाला. भारत देशामध्ये सर्वात जास्त लोकसंख्या ही युवकांची आहे आणि कोणत्याही देशाचे भविष्य हे युवकांवरच निर्भर असते. नव्या प्रतिभा येण्याने देशाचा विकास होतो. म्हणून युवकांना योग्य ते मार्गदर्शन मिळावं म्हणून भारत देशामध्ये 12 जानेवारी हा दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस म्हणून ओळखला जातो. थँक्यू. Hey everyone, Gosia this side. Wish you a National Youth Day. Before putting my thoughts on skilling, I would love to put forth these two famous quotes, that is, in the youth we learn and in age we understand. You are never too young to change the world. And my thoughts on skilling is to learn something to change our life and for the betterment of our family and ourselves. The one should be skilled so that it helps them to build their standard of living. Thank you. Hi everyone. In India, National Youth Day is celebrated every year on 12 January, the day the great Indian philosopher Swami Vivekananda was born. Swami Vivekananda was a son. The teaching of Swami Vivekananda are the greatest philosopher asset of the country. In 1984, the government of India declared 12 January as a National Youth Day. My name is Jyoti Puri and my opinion about National Youth Skilling Day is
As we all know, youth are the future and foundation of any country. So it's very necessary to focus on the skilling of youth along with the basic education. Because as we all know, without having a great foundation, we cannot have a great future also. So it's very important to focus on the skilling of youth. And I would like to say thanks ICICI Foundation for contributing towards the skilling of youth like me, and I am very glad that I'm a part of this organization. आज 12 जनवरी है और यह तारीख भारत के लिए काफ़ी अहम है। यही वह तारीख है जब स्वामी विवेकानंद पैदा हुए थे, जिन्होंने दुनिया में अपनी असाधारण प्रतिभा का लोहा मनवाया था और देश का नाम रोशन किया था। उन्हीं के जन्मदिन को देश में नेशनल यूथ डे दिवस के तौर पर मनाया जाता है। नेशनल यूथ स्किल डे सेलिब्रेट एवरी ईयर्स और 12 Leadership skills are important for managers but also for individuals working with peers and teams. Anyone can be a leader. Thank you. Hello everyone. Happy National Youth Day. On this special day I want to say a few lines on it. As we all know, India is the country of youth. Nearly 35% of the population is below 30 years. And it is the strength of the country. If this population is handled properly, functioned properly and trained properly, it will be the great advantage for the country. In this regard, some of the organizations such as ICICI Academy are coming forward to groom the youth, function the youth and to train the youth. It will not only help the youth to make their future but also in return to serve the country. I am very grateful that I am part of the ICICI Academy. Thank you so much ICICI Academy. At last again, happy National Youth Day to all. Thank you. Hi, my name is Ankita Zadge and I'm going to say few words on National Youth Skill Day. And this is very important day, and this day celebrated on 12th January, and the main aim of this day is encourage the youths to celebrate the value of acquiring skills. And there are so many academies like ICIC which gives the opportunities to youths to develop their skills and achieve the personal success in their life. And I'm glad that I'm the part of this academy, and I like to say thank you ICICI Academy.